And simultaneously, we have on digital platform, we have a Professor Kavnesh Saxena sir on online guest connected with us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would request Dr. Neetu Sharma ma'am, Organizing Secretary Seminar, Team Faculty of Humanities and Social Science to honor our chief guest, Professor Vidya Jain ma'am, Director Center for Gandhi Study, University of Rajasthan, Jaipur. Almost 7 years ago. Yeah. Now, I would request our registrar, Mr. Vijay Yadav, sir, to honor our president, Professor S.C. Jain, sir, with a book. Thank you, sir. As we know that today we come together to delve into the visionary ideals of Mahatma, the father of our nation, Mahatma Gandhi. As we look back on the past 100 years and gaze forward into the next century, it is only fitting that we contemplate the relevance of Gandhi's principle in shaping India's future. Mahatma Gandhi's vision, his life, and his teaching have had a profound impact on our nation. He dreamed of a free India, a nation where the principle of truth, non-violence, self-reliance, and social justice would guide our path to progress. His vision extended beyond independence. It was vision for just, equitable, and harmonious society. Our seminar is structured around thematic sessions featuring renowned speakers and experts who will share their insights and perspectives on various aspects of Gandhi's vision. We are profoundly honored to have a distinguished panel of experts and scholars with us today, whose expertise and wisdom will undoubtedly enrich our discussion. As we embark on this intellectual yogage, let us guided by timeless words of Mahatma Gandhi, who once said, "You may never know what result come of your action, but if you do nothing, there will be no result." So let's our action today help shape the India of tomorrow. Moving forward to the next, uh, as due to some medical issue, our chairperson sir will join after some time. So moving forward to the inaugural address. Now it's time to display pleasure to invite a person whose leadership and vision have been instrumental in shaping our university, who is true inspiration for all of us. Your presence today is a source of great motivation for all of us. We eagerly await your inaugural address and the guidance you will provide to set the tone for this seminar. So I would like to invite our President, Professor S.C. Jain sir, to grace the stage with their presence and deliver the inaugural address. Good morning and a very warm welcome to all of you. At the outset of the seminar, it is my honor to welcome Professor Vidya Jain, an eminent international figure in the field of political science as well as Gandhian vision. I welcome Professor G.B. Katkar, the Managing Director, Registrar Sri Gajan Singh Yadav, all deans and heads, all faculty members as well as non-teaching staff
and the research scholars. At this time of seminar, I will not like to forget our founder chairperson, Srimati Bharti Parasar, and he followed the vision of Gandhi because some places Gandhi says that it is not the man who makes vision, but it is the vision which makes a man perfect. And it was the vision of Srimati Bharti Parasar that he wanted to enter into the educational side, and because of this reason only, she could be success in the creation of a very huge and big educational group of institutions. Because of her sickness, she is not here, but she is definitely joining us or watching it through the virtual mode. Our chairperson, Dr. Bharat Parasar, because of some health issues, he is not here, but he will be joining us very soon. Our chief guest, Professor Vidya Jain, she is a real and true follower of Gandhian ideology and Gandhian thoughts. She had been the director of Center for Gandhian Studies there in the University of Rajasthan for about a period of 7 to 8 years. And she is not a national personality, but she is also an international personality because at international forum, she has traveled almost every part of country to share the views of Mahatma Gandhi. I welcome here all deans and my foremost thanks are to our managing director, Professor D.D. Kakkar, because this is only his efforts that the academic activities in the university could take place, and these are only his efforts that this seminar is shaped. He is giving us the ignition. You know, the university came into existence in the year 2015, and sometimes we had the thought to organize some seminars, conferences, other things also, but we were lacking some ignition, and this is what he has provided us. And he's a man of diversified expertise, and he too has some vision. Like if you talk to him, he'll give you the vision of 23, 24. If you talk to him, he can give you the vision of 24, 25, which I lack myself. To be very honest, I accept it, but he is having the vision. And when a person is having vision, the definitely goals are achieved. But this is a multidisciplinary university which is equipped with the well-experienced persons. We are having the faculty of agriculture, which is being regulated, which is being operated by the retired professor, Professor S.N. Sharma, who is from Agriculture University, Jaipur. We are having the faculty of pharmacy also. We are having the faculty of education also. We are having the faculty of social science and humanities. We are having the faculty of commerce and management. We are having the faculty of basic science also. And it is the vision only of Professor D.D. Kakkar that we could be in the position to start some more faculties in the university. So not to take much time,
The seminar on Gandhian vision 1947 to 2047. The first question rises that why 100 years? क्या औचित्य है 100 साल का? But I say that the ideologies and thoughts are still effective and it will remain effective for the further decades to come. It was only the vision or thought because Gandhiji believed in three aspects, that was सच्चाई, अच्छाई और सफाई. Because of his vision only, in the year 2014 on 2nd October, स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था जो अभी तक भी चल रहा है. And this is being followed not in India but all over world. Gandhiji believed in non-violence. And non-violence, मैडम अभी बता रही थी नॉन किलिंग. मैडम अपने विचार शेयर करेंगे नॉन किलिंग वगैरह पे. But once Gandhiji wrote about Hitler and he conveyed to Hitler also that you are not leaving any legacy to the peoples. If you win the war, that will be the beginning of disaster power. So these were his views regarding the non-violence also. And if we follow the Gandhian thoughts, we can grow, provided we are ready to sacrifice selflessly. Purity, his main emphasis was on सच्चाई. You have to be truthful, you have to be honest with you. So there are so many regions because it is not even a single place, but at every place you will find the vision and thoughts of Mahatma Gandhi. And if we follow it in a true manner, we can grow ourselves. So not to take much time, because we have to listen to the views of other participants also. Once again, I thank you very much. And again, I welcome all of you to deliver your views on the Gandhi. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your enlightening inaugural address. Your words have provided us with the inspiration and direction needed to make this seminar a resounding success. Now, moving on to the next for the introduction to the seminar. Now, it is my privilege to introduce a key figure behind the screen, someone whose tireless efforts, dedication have been pro-vital in bringing this seminar the success. Please join us in welcoming the organizing secretary of this seminar, Dr. Neetu Sharma Ma'am, Dean Faculty of Humanities and Social Science, to the stage for introduction to the seminar. Gandhiji and Gandhism are always more than what we know. A pleasant good morning to the dais. Our chief guest, Professor Dr. Vidya Jain ma'am, keynote speaker, Professor Dr. Karunesh sir, chairperson Dr. Bharat Rashar sir, president, Professor Dr. S.C. Jain sir, and all dignitaries, deans, HODs, and faculty members, and all research scholars. Mahatma Gandhi was a visionary leader who played a pivotal role in shaping the destiny of our nation, Bharat. As we move forward, let us not only celebrate the legacy of Mahatma Gandhi, but also engage in meaningful discussions on how his vision
can continue to be a guiding light for our great nation in the decades to come. Our foremost duty, being a citizen of Bharat, is to keep the thought and principles of Bharat, Father of Nation, to be permanently alive in current scenario. In this context, the Faculty of Social Science and Humanities of Maharishi Arvind University felt need of detailed deliberation on the thought and work of Mahatma Gandhi, and in this manner, the idea to organize a seminar on Gandhi's vision for India came into existence. During the seminar, we will explore the major contribution of Mahatma Gandhi toward a prosperous, inclusive, and harmonious Bharat and his idea on non-violence, social justice, and economic self-reliance. The seminar will be conducted on hybrid mode on the topic Gandhi's Vision for India 1947 to 2047. In order to cover it effectively, the seminar has been divided into sub-themes, namely revisiting Gandhian idea in the changing scenario, Gandhi, Swadesh and Swavlambi Bharat, Gandhi and literature, relevance of Gandhian thought of education in present times, the impact of Gandhian ideology in Indian constitution, social and educational views of Gandhiji, Gandhi's thoughts on management and leadership, Gandhian way of health, hygiene and sanitation, impact of Mahatma Gandhi, concepts on mental health, and Gandhian way of politics. I am happy to share that in this seminar, 194 academicians and research scholars are participating, and 75 research papers will be presented in two technical sessions, both online and offline. I hope and believe this seminar will further enrich our academic vision, and I extend my heartfelt thanks to all dignitaries and participants for joining us in this enlightening journey. Thank you. Thank you, Mike, for the enlightening introduction. Your insight into the seminar purpose, structure, and objectives have set the stage for the enriching discussion and knowledge sharing that await us. Now, moving forward to the next most awaited thing, destinated events like this become even more special when we gaze by the presence of a person who embodies excellence and wisdom. Today, we have fortunate to have with us a distinguished personality, a visionary leader, that is Professor Dr. Vidya Jain Ma'am. She is a former eminent professor of political science and remained director of the Center for Gandhian Study, University of Rajasthan, Jaipur, India. During her successful academic journey, she had mural of achievement by holding not only prominent statutory position but also a high position. Under her guidance, the Center for Gandhian Study in University of Rajasthan had a plenty of feathers of its success, and this is only her contribution that a lot of research work on Gandhian perception is being carried out. She had been the most successful principal of one of the most prestigious college of Rajasthan University, that is Maharani College. She is only her love and affection that whenever she is seen publicly, you will find her surrounded by the students, scholars. Under her, under her guidance, many of the students achieved the prestigious target of IAS and RS. She had been, look, she have a lots of, bliss, but थैंक यू सो मच एंड डोंट बिलीव इट हम लोगों ने तय किया था कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे सबको बहुत बहुत नमस्कार और थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है आदरणीय मेरे अनुज है मुझे लगा था वरिष्ठ है विश्वविद्यालय में पर आप मुझसे एक वर्ष बाद सेवानिवृत्त प्रोफेसर एच.सी. टेंसन हु इज वाइस चांसलर ओवर हियर प्रोफेसर गुरुदत्त जी हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और आप भी बैठे गजेंद्र जी जो रजिस्ट्रार हैं नीतू और सभी शिक्षक साथी अच्छा लगा पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी मिली एंड मोस्ट ऑफ the important thing which is you all of you have come here gathered here to talk about to just discuss about what Gandhi can offer to us. You would be amazed to understand that whole of the world, especially the intellectuals of the world,
globally are discussing this man who is Gandhi. And that this Gandhian model of development has become very, very viable, visible, and validated every day. I have several opportunities to be present on so many international forums because the two prominent model of development have failed tremendously. Capitalism and Marxist model of development. They haven't offered, they haven't resolved people's agony, pain and miseries. Capitalism, after the advent of globalization, its contradictions have come on surface and they have divided this world. Rich and poor rift has been increasing, unemployment and everything. All of you are aware about that. So here is the third model of development, which is Gandhian model of development, which is the sustainable model of development, which is a model of appropriate technology, which is pro people, which is pro poor, which is pro peasant, which is pro Shramik, which is pro women and which is pro mother nature. So believe me, Gandhi is as relevant today as he was never before. So this is an intellectual discourse. Gandhi is accepted so widely. दुर्भाग्य हमारा है कि हमने गांधी के साथ न्याय नहीं किया. हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने, आजाद भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने जो जगह जो स्थान गांधी को संविधान में मिलनी चाहिए थी और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में मिलनी चाहिए थी, अगर होती तो भारत की तस्वीर शायद कुछ और होती. मुझे लग रहा है थोड़ा सा लालची कि मैं एक ओवरव्यू दूं और शायद फिर हम कहीं उनको फिक्स कर पाएंगे. जिस तरह नीतू ने बताया 175 लोग पेपर पढ़ेंगे. आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू डू justice in one day, talking about almost all, and which is true. Gandhi has talked about each and everything. He was an eternal learner. और गांधी बिलीव करते थे एक कांस्टेंट और एक सर्कुलर लर्निंग में. मैं कहूँ और आप सुने और चले जाए नहीं. Learning is an mutual process. Even on the day of his assassination, he was learning Bangla language. तो गांधी ने इतना पढ़ा, इतना लिखा, इतना कहा, कहने से पहले उसे किया. तो ऐसा व्यक्तित्व, आइंस्टीन ने जब कहा कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि ऐसा कोई हाड़ मास का पुतला धरती पर चला होगा, तो सचमुच गांधी विस्मित करते हैं. गांधी की जो दो बीज पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज और ऑटोबायोग्राफी, वो आप सबके पास होनी चाहिए. 20-20 रुपए की किताबें, एक मोबाइल का छोटा सा रिचार्ज भी उससे ज्यादा होता है, तो आप सबके पास होनी चाहिए. बहुत पावरफुल किताबें हैं और पूरी दुनिया में खासतौर से हिंद स्वराज अगर आप देखें, पूरा क्रिटिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन का. सर जिस बाजार की बात आप कॉमर्स वाले करते हैं दिन भर, पूरा बाजार ने समाज का ताना बाना बिखेर दिया है. We have big markets, we have big malls and a solitary individual. आज जितना व्यक्ति अकेला है, एकाकी है, उतना शायद वो कभी नहीं था. तो अति भौतिकवाद ने हमसे वो सुख चैन छीन लिया है. और यहाँ गांधी के विकल्प हैं, गांधी के विमर्श हैं जो कुछ कहना चाहते हैं. गांधी की अगर यात्रा, 2-3 शब्द, मोहन से महात्मा की जो उनकी यात्रा है, बहुत साधारण विद्यार्थी थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, अंग्रेजी भाषा से डरते थे. जब पहली बार रजिस्ट्री करने आए वो राजकोट में, सरदार पटेल भी वह उपस्थित थे, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जा रही थी. उन्होंने कस्तूरबा को आके कहा, कस्तूरबा दे वर मैरिड एट द एज ऑफ 13 ओनली, सो दे वर इवॉल्विंग टुगेदर. बड़ा ही ऐसा डेमोक्रेटिक कपल मेरे ख्याल से कहीं आपको दिखाई नहीं देगा. कस्तूरबा had all the guts to have her decent to just say no to what Gandhi offered. लोग बहुत बार आलोचना करते हैं कि उनके रिश्तों की जब बात करते हैं, पर हम किसी भी दार्शनिक का जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें उसके संदर्भ में जाके देखना चाहिए. व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट. और गांधी हर लेवल पर काम कर रहे थे, व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे, क्योंकि उस वक्त सोशल रेनेसां भी चल रहा था. समाज का पुनः निर्माण, पुनः उत्थान हो रहा था. सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवाओं की समस्या थी, पर्दा प्रथा थी. उन सारी राजा राममोहन रॉय से लेकर गांधी तक सब उनसे जूझ रहे थे. और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था. तो एक गुलाम औपनिवेशी देश में तो बहुत बार पूरी दुनिया में गांधी इसलिए बहुत पॉपुलर है कि गांधी को एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट पीपल आर एक्सेप्टेड. राजनीतिक रणनीतिकार, सत्याग्रह का एक ऐसा अचूक हथियार, जादुई हथियार हम सबके हाथ में दे दिया. पूरी दुनिया में अनेकों आंदोलन, थाईलैंड में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ट्रंप के विरुद्ध अनेकों आंदोलन, पानी के आंदोलन, जल जंगल जमीन के प्रश्न, एंटी रेडिएशन, एंटी अपार्थी, महिला उत्थान के प्रश्न, पर्यावरण के प्रश्न,
पर्यावरण और हिंसा दो मूल बातें जो गांधी को सेंटर स्टेज लाके खड़ी करती है। पूरी दुनिया में सत्याग्रह के आधार पर आंदोलन लड़े जा रहे हैं और सत्याग्रह कितना महत्वपूर्ण, इसीलिए गांधी को रणनीतिकार ज्यादा माना जाता है। तो ही इज अ फिलोसोफर, आ थिंकर, आ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आ सोशल रिफॉर्मर और सबसे बड़े तो संत थे। तो गांधी के लिए कहते हैं ही वाज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियंस एंड अ पॉलिटिशियन अमंग सेंट। संतों में राजनीतिज्ञ थे। तो सचमुच विस्मित करते हैं, मतलब कहाँ से उनका खाका खींचा जाए। अगर आप ऑटोबायोग्राफी गांधी की पढ़ें तो गांधी निरंतर ट्रेवल करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोसाइटी टू नेचर टू गॉड। Gandhi is unable to differentiate between individual and God. व्यक्ति और ईश्वर में भेद नहीं करता। तो जो व्यक्ति ईश्वर और व्यक्ति में भेद नहीं कर रहा, वो हिंदू मुसलमान में और स्त्री पुरुष में तो क्या भेद करेगा। तो कंटिन्यूसली ट्रेवल्स, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसेंड बिटवीन दीज फोर। और इसलिए कभी जन संघर्षों की बात करेंगे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को कैसे घुटने टिकाए जाए, सत्याग्रह को कैसे पैना किया जाए उसकी बात करेंगे। और अचानक वो पर धर्म, मोक्ष, आध्यात्म, आत्मा उसकी बात करने लगेंगे। ओनली गांधी कुड डू दैट बिकॉज उनका रिलीजन और व्यक्ति में जो एक अपार विश्वास था वो बहुत बहुत अटूट था। मुझे बहुत बार विस्मित होती हूँ, हंसी आती जब लोग कहते हैं गांधी इज ऑब्सोलीट, गांधी इज आउटडेटेड। आई थिंक गांधी तब तक प्रासंगिक रहेंगे जब तक इस दुनिया में जुल्म है, इस दुनिया में अन्याय है, क्योंकि अन्याय लड़ने का सबसे बढ़िया हथियार उन्होंने हमें दिया, वो है सत्याग्रह। गांधी तब तक रेलेवेंट रहेंगे जब तक इंक्लूसिवनेस रेलेवेंट है, जब तक प्लूरलिज्म रेलेवेंट है, जब तक कॉम्प्रोमाइज रेलेवेंट है। गांधी कॉम्प्रोमाइज के लिए पक्षधर थे। गांधी ने कहा अगर मैं एक विषय पे दो विरोधी बातें कहूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं दो विरोधी बातें कहूँ, please go by my second opinion because I have changed my stand on the basis of my experience and experiment. I can change my stand, I can evolve my stand. हम तो एक बात कहते हैं अड़िग रहते हैं, सही हो गलत है पता नहीं, पर गांधी निरंतर ऑटोबायोग्राफी में वो उनका कन्फेशन है। बहुत कम दार्शनिक है जो कन्फेशन लिखते हैं, उन्होंने जो गलतियां की, जो भूलें की। उनका एक मुस्लिम दोस्त था, उनके और उसमें आके के गांधी जिससे जब उनका चाइल्डहुड देखते हैं, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे एक फ्रेजाइल, कमजोर, ठीक से नहीं दिखने वाला, ठीक से पढ़ने वाला नहीं, साहब बिच्छू जो आप लोग पढ़ते हो कि उनसे डरने वाला व्यक्ति कैसे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी charismatic लीडर बन गया। हाउ ही ओवर एम्पावर्ड हिज वीकनेसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जब साउथ अफ्रीका गए, उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया कि नहीं तुम इस डिब्बे में नहीं बैठोगे, तो गांधी ने फुटपाथ पे बैठ के 3 घंटे सोचा कि मैं वापस भारत लौट चलूं या यहाँ पर संबल इकट्ठा करूं। वही उन्होंने किया, एक बहुत बड़े आंदोलन को, एंटी अपार्थाइड ह्यूमन राइट्स आंदोलन को खड़ा किया। तो गांधी अपनी कमजोरियों से विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, सीखते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और उन गलतियों को फिर कभी नहीं दोहराते। हम गलती करते हैं, सॉरी बोलते हैं, अगले दिन फिर वही गलती करते हैं। तो हियर इज अ मैन जिस ट्रुथ की सर बात कर रहे थे, ट्रुथ और अहिंसा से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके लिए वो सबसे परम आदर्श एक दर्शन था। तो गांधी की रेलेवेंस निरंतर बनी हुई है और बनी रहेगी। गांधी की इडियम्स बहुत, सिंबल्स कितने प्रासंगिक हैं। आज भी लोग चरखा एक छोटा सा चरखा है, उससे आप सूत काट के पूरे देश को, he couldn't close the whole nation, he knew that, but that charkha became a symbol of self reliance, आत्मअभिमान, स्वाभिमान, गरिमा। और जिस स्वच्छता की बात, गांधी बहुत, आश्रम का मतलब ये जिसमें श्रम हो। तो गांधी खुद अपनी झाड़ू बुहारू करते थे, अपना भोजन पकाते थे, अपनी विसिनिटी में भोजन उगाते थे जिसको आप ऑर्गेनिक फूड कहते हो, और बहुत बार बाग के लिए वो खाना बना के रखते थे। तो इतना श्रम, मीलों पैदल चलते थे। गांधी फिजिकल लेबर की गरिमा में, हम तो आजकल बिल्कुल श्रम नहीं करते, श्रम करने में तो शर्म आती है, हमें पानी का ग्लास भी शायद भर के नहीं पीते हैं खुद। तो गांधी कहते हैं जो व्यक्ति श्रम नहीं करता और भोजन करता है वो चोर है। सो जिस, और मीलों पैदल चलते थे, जिस आजकल आप लोग 10,000 कदमों की बात करते हैं, गांधी ने तब वो किया। पेट भरने के लिए भोजन करते थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे गांधी, 2 वक्त भोजन करते थे, 10 बजे और 6:15 बजे। किसी भी आंदोलन पे गए लौट के उसी वक्त करते थे। 10 तोला भोजन, विच इज 100 ग्राम,
जिसमें 30 ग्राम लिफी, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी का फाउंडेशन दर्शन का इंडिविजुअल है. He was designing a new man, a new women, a new individual. सत्याग्रही का आधार सत्याग्रह, सत्याग्रह का आधार सत्याग्रही होगा. और गांधी कह के नहीं करके बता रहे थे. तो 30 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 30 ग्राम बादाम और 30 ग्राम अनाज, इस तरह का भोजन करते थे. उस इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्योरली वेजिटेरियन थे, वीगन थे. बाद में उन्होंने बकरी का दूध प्रारंभ किया क्योंकि उनको एक बिल्कुल अनक्यूरेबल रैशिश हो गई थी, तो ही वाज एडवाइज्ड और उन्होंने वो शुरू किया. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसलिए जानना जरूरी कि कैसे एक व्यक्ति से, एक मानव से, एक महामानव, एक मोहनदास करमचंद गांधी कैसे इतना बड़ा महात्मा, जिसकी पूरी दुनिया में गांधी has outgrown his contemporaries in the whole world. No other Indian philosopher is so accepted as Gandhi is. हजारों संस्थाएं हैं जो पीस पर, नॉन वायलेंस पर, नॉन किलिंग पर, वेजिटेरियनिज्म पर, एनवायरमेंट के इश्यूज पर गांधीयन लाइंस पे काम कर रहे हैं. हजारों आंदोलन हैं जो जॉय ऑफ गिविंग की बात करते हैं, वॉलंटरी पॉवर्टी की बात करते हैं. आई एम रिच but I choose to live like a poor at least for 2 days. I will say no to technology for 2 days. हॉलैंड से आंदोलन शुरू हुआ, 2 दिन साइकिल पे चलूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम चीज खोज रहे हैं वो हैप्पीनेस है, जॉय है, पीस है. खासतौर से जब आप मेरी उम्र में आएंगे, वृद्धावस्था में, वृद्ध हो रहे हैं हम लोग, 67 years young, you know. So उस उम्र में आपको आके लगेगा कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे थे और किसको क्या सिद्ध करना चाह रहे थे. तब जब वो आंदोलन मुझे बड़ा अच्छा लगता. वॉलंटरी पॉवर्टी, यू नो, आई एम रिच बट आई चूज टू लिव like a poor at least for 2 days. I will say no to technology for 2 days. I may be having a Mercedes car, but I will ride a cycle at least for 2 days. इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं. मैं प्रकृति के पास लौटूंगा, मैं फिशरी करूंगा, मैं बुजुर्गों के पास बैठूंगा, मैं बच्चों को हक करूंगा. हमने ये सब छोड़ दिया. पता नहीं मानव कहाँ खो गया है. और इसीलिए आप देखिए आज जैसे युवाओं को हार्ट एलिमेंट्स हो रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, उनको रोज कुछ खरीदना पड़ता है. आई हैव अ फ्रेंड जो रोज कुछ खरीदता है, कुछ खरीदे बिना उसको नींद नहीं आती और सुबह फिर रोज को लौटाता. मैं कही ठीक काम मिल गया. तो सी अब एक वक्त पे आके सोचना पड़ेगा व्हाट इज योर कंडक्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ. सो मैं बेसिक गांधी की बात करना चाहती हूँ ताकि एक ओवरव्यू से फिर आप आगे के टेक्निकल सेक्शंस में उस पर और डिटेल में बात कर सकते हैं. सबसे पहला थॉट जो गांधी का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दिस थॉट ऑफ हार्मनी. जैसे मैंने आपसे कहा कि गांधी व्यक्ति और ईश्वर में भेद नहीं करे. गांधी समन्वय और संतुलन के पार एक्सीलेंस दार्शनिक थे. उनसे बड़ा दार्शनिक समन्वय का कोई नहीं हो सकता. गांधी का एक लाइनर है जो बहुत, which is very near to my heart. Gandhi says, I am there for you and you are there for I am. We peacefully coexist. We are not individual beings. We are interbeings. We are world beings. We are sons and daughters of one God. और ईश्वर इंसान ही नहीं, पशु पंछी, नदी, झील, तालाब, पहाड़ सब एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है. इंसान को कैसे अभिमान हो गया कि वही सब कुछ है, धरती को वही अकेला चलाएगा. और इस अभिमान का प्रत्युत्तर प्रकृति ने आपको कोविड के रूप में दिया था, क्योंकि कोविड ने आपको ये सिखाया, क्योंकि वी स्टार्टेड एनक्रोचिंग अदर स्पीसीज स्पेसेस. हम उनका सनशाइन, उनका पानी जो दूसरी प्रजातियों के लिए वो भी सब खर्च करने लगे. तब प्रकृति ने आपको कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि लाइफ एक कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट नहीं है. लाइफ इज नॉट अ पिरामिड, इट इज अ सर्कल. इट इज नॉट अ अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कोहेरेंट लिविंग विद ईच अदर. तो हमें इस म्यूचुअलिटी का, इस पारस्परिकता का, एक दूसरे का सम्मान करना होगा. इस समझना होगा कि आपका, अगर मैं नहीं आती तो आपकी आज आपका क्लास ये सेमिनार नहीं होता, आप नहीं आते तो मैं अकेली किसको सुनाती. We need each other. We belong to each other. We have to understand this, because this गांधी का ओशियनिक सर्कल, जो लोग पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंसेस पढ़ते हैं उनको पता है, गांधी कहते हैं कि समग्र ओशियन की तरह है और आप उसमें एक बूंद है. The बूंद is very very important because it is the nuclei, the focal point. पर बूंद तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वो समुद्र के भीतर है. बाहर निकाल दीजिए बूंद का, कोई महत्व नहीं है. तो दिस इंटरडिपेंडेंस का, इस हार्मनी का हमें सम्मान करना होगा और इसी को आगे लेकर. और ये जो बूंद है, नाउ आई कम टू दिस बूंद व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी व्यक्ति की
की क्षमताओं में अपार विश्वास करते थे। प्रथम पुरुष एक वचन तुझसे ही शुरुआत है। गांधीयन सॉल्यूशंस लाई इन इंडिविजुअल। जो आपने सुना होगा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो गांधी इस व्यक्ति का निर्माण कर रहे थे और आज मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है। कितने भी सिस्टमिक परिवर्तन ले आइए आप, until and unless you change this man, his attitude, his understanding, his mindset, nothing can happen. महिलाओं से संबंधित बहुत इस देश में कानून है, पर महिलाओं की स्थिति तो नहीं बदली क्योंकि आपने सेंसिटाइज नहीं किया मैन गवर्नमेंट को। आप लोकपाल बिल लिया और लोकायुक्त तो फिर व्यक्ति बनेगा। सो until and unless you change this individual, nothing can happen. और इसलिए गांधी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, छुआछूत के विरुद्ध, इन सारी चीजों से मिलाकर एक ऐसा नैतिक व्यक्ति खड़ा करने की कोशिश की जिसमें जो सत्य अहिंसा के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है फियरलेसनेस और जो फ्रीडम। गांधी फ्रीडम के अटमोस्ट पुजारी थे। गांधी सेज आई कैन प्रिफर टू डाई देन टू बी अनफ्री, आई एम कंडेम्ड टू बी फ्री। और इस स्वतंत्रता का जो इतना बड़ा पुजारी है, इसका बहुत बड़ा महत्व, और यहीं से गांधी का पूरा स्वदेशी का कॉन्सेप्ट निकलता है कॉमर्स को लोगों को। गांधी वाज नॉट अगेंस्ट, गांधी का स्वदेशी विदेशी का विरोधी नहीं है, औपनिवेशी का विरोधी है। व्हाटएवर कॉलोनाइजेस मी, जो मुझे गुलाम बनाता है उसका मैं विरोध करता हूँ। गांधी was the most globalized personality. I mean, a man who goes to England to study, works in South Africa, he reads all the विदेशी literature, Ruskin, Thoreau, Tolstoy, सबको पढ़ते हैं। तो most globalized personality, but Gandhi says keep the doors and windows open so that the fresh air can come in. हवा आने दो ताजी, रोशनी आने दो, नए विचार आने दो, पर ध्यान रहे कि तुम अपनी जड़ों से ना उखड़ जाए। और आज ग्लोबलाइजेशन ने ये किया है, हमारी जड़ें हिल गई हैं। मेरी अपनी पहचान है, आपकी पहचान है, भारत की पहचान है, हम अपनी पहचान को खो रहे हैं। Then Gandhi says कि no, it is not done. हमें अपनी पहचान को, so Gandhi is a globalized personality, but his globalization is, जिसको आप कहते हैं ना, आपकी आंखें आसमान में हो पर पांव जमीन पर हो। Think globally but act locally. और इसलिए गांधी पूरा एक सस्टेनेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने यहाँ अलवर के पास राजेंद्र सिंह जी, मैं गई 2-3 बार अपने स्टूडेंट्स को लेकर, पानी के पोखर वहीं के गांव के हरि भाई और रामा बाबू और जो पगड़ी पहने बहुत अच्छा पानी कंजर्व कर सकते हैं। We do not need Oxford या हार्वर्ड का एक्सपर्ट over there. We have the technology, we have the local talent, we have the local resources to understand our problem and to resolve them. तो इस लोकल टैलेंट का, इस हाथ के हुनर का, इस ग्रामीण उद्योग का हमें सम्मान करना होगा। जब लोग कहते हैं कि गांधी, अभी हम अपन लोग हंस रहे थे तकरीर पर, गांधी छोटी मशीनों के पक्षधर थे। He knew this, that he is catering a big nation with a big middle class. अगर आपने इतना ऑटोमेटाइजेशन कर दिया, जो आज हम आपको उदाहरण दो आपके सामने में रखना चाहूंगी, जापान और चीन का, दे नो where to automatize and where to not. वो सोशल सेक्टर्स में ऑटोमेटाइज नहीं होना चाहते। तो आपको इस बात को तय करना पड़ेगा कि आपको किन फील्ड्स में कितना ग्लोबलाइजेशन चाहिए। तो गांधी का ग्लोबलाइजेशन सेलेक्टिव है, सोशल सेक्टर्स के लिए नहीं है। आज आप देखिए, पंसारी, बढ़ाई, मोची, दर्जी, नाई सब गायब हो गए सारा, क्योंकि जब बड़ी मछली आती है तो छोटों को खा जाती है, और ये बहुत बड़ी एक मुसीबत की जड़ हो सकता है। तो गांधी का पूरा स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, और आजकल लोग ग्लोबलिज्म की बात करते हैं, ग्लोबल प्लस लोकल, जहाँ टेक्नोलॉजी और कल्चर का कोई कॉम्बिनेशन होगा। जापान में मुझे 2 बार रहने का मौका मिला। दीज पीपल नो कि कैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, पर कल्चरल रूट्स को नहीं छोड़ना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उनको गुलाम नहीं होना, उनको वो सब नहीं करना। तो डेवलपमेंट में ह्यूमन टैलेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल डेवलपमेंट के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। तकनीक और कल्चर के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। आज हम सब एक साथ खा रहे हैं, एक साथ पी रहे, बहुत होमोजेनाइजेशन हो गया। आपको पिज्जा नहीं खा रहा है फिर भी खाना, क्योंकि हर जगह वही परोसा जाता है। छाछ रावड़ी का तो कोई मिलती नहीं है। तो सवाल ये कि इफ वी लीव slowly we just don't know what we are living and what we are surrendering. तो गांधी का स्वदेशी
अपने कल्चरल रूट्स को बनाए रखकर अपनी पहचान को एनहांस करते हो। एंड बिलीव मी, पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी है, भारत की अगर 18वीं फ्रेंच सेंचुरी थी, 19th ब्रिटिश थी, 20th अमेरिकन थी, तो 21st सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी, इज एशियन सेंचुरी। और अगर एशियन एज बनना है तो हमें अपने जो गांधी का नेतृत्व, गांधी के विचार कहीं आगे लाकर रखने होंगे। तो ये न सिर्फ भारत की शताब्दी, युवाओं की शताब्दी भी है और महिलाओं की शताब्दी भी है। सो दिस इज रियली वेरी वेरी, आप लोग बड़ी अच्छी सदी में पैदा हुए, हम तो 1947 तक का विजन आप 10 बरस बाद देखिएगा। अभी भी मैं कल मुझे कहीं विमेन इश्यू पे बोलना है एक विदेशी ग्रुप के साथ, तो जब मैं डेटा देखे तो फीमेल फिटिसाइड ऑलमोस्ट is on the very decline. That sex ratio is increasing. Violence against women is actually, it's a brighter picture is coming up. बहुत सारी उज्ज्वला योजना वगैरह का असर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पिक्चर ब्राइटर पिक्चर सामने आ रही है। और इस बात को समझने के लिए हमें मैं गांधी इधर उधर हो जाते हैं तो तो जब हिंद स्वराज गांधी ने लिखी तो बिल्कुल उसमें कहा उन्होंने कि ये शैतानी सभ्यता है जो कॉमर्स वाले जहां ले जा रहे हैं, पूरा मार्केट का कैप्चर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ नीड्स। और सिखाना निरंतर, महिलाओं को तो 4 प्रकार के नहाने के साबुन चाहिए, फेस वॉश, हेयर वॉश और बाकी 2 तो सवाल ये कि आपको सिखाया जा रहा, आर्टिफिशियली आपकी नीड्स बढ़ाई जा रही है ताकि वो मार्केट में आपका अपना माल खपा सके। गांधी वॉज फॉर मिनिमम, बिकॉज़ ही न्यू। गांधी कहते हैं अगर जिस तरह वेस्ट करो, तुमको 2 3 4 धरतियां चाहिए, अगर और धरती पैदा कर सकते हो तो यू कैन गो एट, अदरवाइज दलाई लामा भी कहते हैं कि एक जगह लिखता है बिहेव योरसेल्फ, ह्यूमन बीइंग्स को कहते हैं यू आर द वाइजेस्ट चिल्ड्रन ऑफ मदर नेचर, behave yourself, otherwise one day mother nature can even decide to live without humans because it has much more beautiful and wonderful eco life to look at। तो सवाल ये है कि हमने इतना बाजार के द्वारा अपने आप को, तो समझे कि बाजार ही बाजार है, समाज तो कहीं है ही नहीं। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, भौतिक शाम को चाय पीने जाने के लिए एक भी दोस्त नहीं है। तो ये इतना आभासी दुनिया, इतना एक इल्यूशनरी वर्ल्ड हमने बना के कर दिया, उसका खामियाजा व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। सच माने मुझे अभी रोटरी क्लब में सब मानसिक अवसाद और गांधी पर बोलने, मैंने सोचा मेरी दादी तो कभी कहती नहीं थी मुझे डिप्रेशन है, मेरी माँ ने से भी मैंने शब्द नहीं सुना कि मुझे डिप्रेशन है या मैं उदास हूँ। उनकी समस्याएं वास्तविक होती थी कि शादी है, पैसे नहीं है तो पैसे जुड़ना है। ये आज तो मेरा 10 साल का पोता भी कहता है मेरा मूड ठीक नहीं, आप मुझसे बात मत करिए। मूड वगैरह तो मैंने सुना ही नहीं मेरी माँ और दादी से। See where we are going to, for this we have civilized, कोई कम्युनिटी लिविंग ही नहीं, हम किसी से जुड़ के रह रहे हैं। इतना एक बच्चों को भी सिखाते हैं अपना टिफिन शेयर मत कर, अपना होमवर्क में, तो आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। वंदना शिवा लिखते हैं कि नदियों ने बहना, फूलों ने खिलना और बच्चों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। Are we really opting for this kind of civilization? If not, then let us refer back to Gandhi, you know. So Gandhi वास्तव में हमें बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। और जो मैं गांधी का एनवायरनमेंट का थॉट आपके सामने रख रही थी, गांधी ने कहा, आपने फेमस कोट गांधी को सुना होगा, नेचर हैज एनफ to fulfill everybody's needs, but it has very little to fulfill anybody's greed. एक जैसे माता पिता अनेकों बच्चों की का पालन पोषण कर सकते हैं, बच्चे अपने दोस्तों को ले जाए, उनको भी भोजन बना के माँ बाप खिला सकते हैं। हालांकि आज तो सारी संतानें मिलकर एक माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे, वो एक अलग कहानी है। बट आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। और हम धरती माँ का बहुत दोहन करते हैं, बहुत उत्पीड़न करते हैं, बहुत शोषण करते हैं, बहुत वेस्ट करते हैं। गांधी के 2 उद्धरण उनकी आत्मकथा में आता है। I should stop here. Maybe 5 more minutes. 2 उद्धरण आते हैं। एक लोटा पानी से गांधी सुबह करते थे। एक बार नेहरू से बात करते करते वो पानी बह गया तो बापू बड़े अनमने हो गए। तो नेहरू ने कहा क्या हुआ, आप उदास हो गए? तो कहते तुमने पूरा पानी बहा दिया। तो नेहरू से साबरमती बह रही, आप और भर लीजिए। गांधी ने कहा ये साबरमती सिर्फ मेरी नहीं, पूरे राष्ट्र की है। When I use my share of resources, when I smartly use these limited resources, that is sustainability.
ये धरती आपके पुरखों की अमानत नहीं है, आपके पास आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। आप क्या छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए? सब यहाँ से खपत करके चलते बनेंगे तो ये नहीं चलेगा। गांधी 2 धोती पहनते थे कि वो एक गरीब की कुटिया में जब गए तो इसलिए एक एक धोती बदल के, क्योंकि देखा नहीं बन सारी तो नहीं आ रही थी, तो बापू उस दिन से एक धोती पहनने लगे। धोती पुरानी होने पर उसका चादर बनाते थे, चादर के फटने पे उसका पर्दा बनाते, पर्दा फटने पे उसका पोछा बनाते, और पोछा के फटने पे उसके दिए की पाती बनाते थे। So just side, he was a smart genius like you and me actually. That's good. Why not? आपने कम से कम प्राकृतिक संसाधनों को अपनी बकौती ना समझ के उसको खर्च करके, आज हम कितना वेस्ट करते हैं। आप घर जाके देखिएगा महिलाओं के पास तो बापरे इतना, दिवाली पे दे दो यार, बहुत बड़ा फर्क। तो यू नो, तो दिस बिकॉज गांधी न्यू दिस कि हम इस तरह से इसको जो खर्च करेंगे तो ये सब नहीं चलेगा। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है गांधी का, एक बस पॉइंट टच करते हो, विमेन पर जो गांधी के विचार हैं, which are very very revolutionary, you know, कि गांधी फेमिनिज्म पे पूरे वर्ल्ड में आज बात हो रही है। वेस्टर्न फेमिनिज्म मैन वर्सेस विमेन कुछ करता है, और मैंने आपसे जैसे कहा गांधी वर्सेस में तो विश्वास ही नहीं करते थे। गांधी का जो पूरा नारीवाद है वो स्त्री पुरुष सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाने की बात है। महिलाओं के लिए उन्होंने, चाहे उनकी शिक्षा है, उनकी बेसिक, उन्होंने कहा कि अगर दहेज लेके शादी करनी लड़कियों को तो तुम कुंवारी रह जाओ, शादी करने की जरूरत नहीं है। और गांधी के आह्वान पर जब अनपढ़ औरतें बच्चों को दूध पिलाते हो, बच्चों को गोदी में लेकर जब राष्ट्रीय आंदोलन में रंग बिरंगी ओढ़नियां ओढ़े आई होंगी, आप सोचिए क्या समा रहा होगा। तो न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना, पर महिलाओं के मन में भी जन आकांक्षा जगी कि मैं भी लेजिस्लेटर बन सकती हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। तो दिस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन बाय हिम। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है गांधी की, गांधी ने स्त्री की गरिमा और अस्मिता के लिए एक नई परिभाषा दी। गांधी कहते हैं कौन है स्त्री? स्त्री पुरुष बराबर नहीं है। पुरुष प्लीज मुझसे नाराज मत होना, स्त्री कई कई गुना ज्यादा है पुरुषों से। क्यों? क्योंकि कौन है स्त्री? शी इज मदर ऑफ मैन, माँ है तुम्हारी, जननी है, तुमको जन्म देती है, और उस जन्म के उल्लास में, उस सृजन के उल्लास में, उस प्रसव पीड़ा को भी भूल जाती है। तो let her forget, let her transfer this love to the whole of humanity, and let her forget that she can ever be object of man's lust. कैसे आपने इस प्रेम और अहिंसा के प्रतिमूर्ति को वासना की वस्तु बना दिया बाजार में। बाजार रोज आपको सुंदर होने के नुस्खे रटवाता है, ये लगाइए, ये करिए, बालों को सीधा करिए, टेढ़ा करिए, भाई जीने तो आराम से, क्या क्या करिए। तो सवाल ये, और सुंदरता की देखिए गांधी ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है, वुमेन फ्रेंड्स हियर। गांधी कहते सुंदर स्त्री वो नहीं जिसकी जिसकी जुल्फे रेशमी हो और कजरारे नयन हो। सुंदर स्त्री वह है जिसके हृदय में ईश्वर का वास है, जिसका पूरा व्यवहार सुचितापूर्ण और नैतिक है, जो स्वदेशी वस्त्रों का धारण करती है, और जो अपने व्यवहार के द्वारा पुरुष को सत्याग्रह के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्वयं सिद्धा स्त्री जो काली और दुर्गा की तरह ताकतवर होगी। गांधी द्रौपदी का उदाहरण देना है। सो गांधी सेज, गांधी द्रौपदी का उदाहरण देते हैं कि जब द्रौपदी, क्योंकि गांधी परंपराओं से उदाहरण उठाते हैं, जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो द्रौपदी कृष्णा का आह्वान करती है। एंड कृष्णा इज नॉट अ फिजिकल गॉड, कृष्णा वो इनर वॉइस है, रिजोल्यूट विल है, वो आत्मबल है जो हर स्त्री के पास है। तो कहने का तात्पर्य कि हर स्त्री अपनी चेस्टिटी और ऑनर की रक्षा स्वयं कर सकती है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, पर हम भूल गए अपनी ताकत। तो गांधी की ऐसी स्त्री, गांधी अगेन कोट गांधी से, rise above your sexuality and work as friends and colleagues for the wider interest of society. You are not only men and women, you are colleagues, you are friends, you are nation citizens, तो हमने जो रिड्यूस करके रख दिया बाजार ने विमेन को, एक बॉडी में रिड्यूस करके रख दिया। हम सिर्फ देह नहीं है, हम मन, मस्तिष्क, मेधा, प्रतिभा और न जाने क्या क्या है। तो सवाल ये, इस स्त्री की गरिमा और अस्मिता की बात जो गांधी जितनी बखूबी और खूबसूरती से करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो आई जस्ट थॉट टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ गांधी। आई थिंक I have not disappointed you, and thank you so much for having me here. And I feel that I'll come back again if it makes sense.
Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable insight with us. Your word has set a positive tone for this seminar. And definitely, ma'am, अब हम लोग थोड़ा सोचेंगे डिटेल्स की ये जो कॉस्मेटिक चीज है इसका कम यूज करें बिकॉज हमारे जो पहले लोग थे वो घर पे लाइक बेसन एंड से ही इतना अच्छा उनका नेचुरल चीज होता था तो हम लोग फॉलो करेंगे एंड विदेशी चीजों को ना लेके हम लोग लाइक स्वदेशी चीजों पे ही फोकस किया जाएगा और आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम आपको और सुने वी हैव अ लिमिटेड टाइम थैंक यू सो मच मैम now moving forward to the next in this age of technology and connectivity we have adapted or new norms of communication while we may not be sharing the same physical space we have unity by the common purpose to learn and share knowledge and explore new horizons. It is indeed a special occasion when we are joined by a speaker who can inspire and enlighten us with a virtual setting. Today we have a privilege of having with a renowned expert, a visionary in their field, and individual whose wisdom and experience are truly inspiring. A seminar of this magnitude become a memorable and enriching experience when we are privileged to listen a distinguished personality who can provide us with a profound insight and expert knowledge. Today we have the having a with a renowned expert, a visionary in a field, and individual whose wisdom and experience are truly inspiring, Professor Dr. Karunesh Saxena sir. He is a Vice Chancellor of Samran University, Bhilwara, Rajasthan. He was ex-director FMS IQAC and CDC Mohanlal Sukhadia University, Jaipur, Rajasthan, India. He has more than 35 years of corporate and academic experience. He has served Dr. S.M. Kaur University, Sagar, MP, Vikram University, Ujjain, MP, Jammu University, Jammu, IGNOU New University. He chaired Professor ICCR, a Government of India Institute, New Delhi. Under his assignment, he completed a term as chair professor in Papua New Guinea. He has created nearly 200 educational films for UGC. At present, a 4 credit 40 models mock program and business statistics developed by him is successfully running on student platform. He is an expert resource person for Kolkata, New Delhi, NET, UGC, AICT, etc. He has so far guided 43 research scholars for their PhD work. 8 more are pursuing their research work under their supervision. He has contributed nearly 150 research papers. Recently, he was nominated by UGC New Delhi to the High Power Committee for Implementation of New Education Policy NEP 2020. Without further ado, it is my distinct honor to invite our keynote speaker, Professor Karunesh Saxena sir, for this seminar to grace us with their keynote address and share their valuable insight on our seminar topic. In the virtual meeting, we are physically apart, so may I request, sir, please. Thank you very much and very good afternoon to all of you. My dear friend, Professor Suresh Jain sir, President, Maharishi Arvind University, Jaipur. The Chief Guest, Madam Professor Vijay Jain. The Organizing Secretary, Dr. Neetu Sharma. All the dear participants, offline, online. मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इतने अच्छे विषय पर मुझे विजय जैन मैडम के बहुत सुंदर विचार सुनने का मौका मिला ऑनलाइन में और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऑफलाइन में वहां उपस्थित होता लेकिन समय की सीमाएं हैं कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जिसके कारण मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ पा रहा हूँ मैं सबसे पहले आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही यूनिक टॉपिक का चयन किया इस नेशनल सेमिनार के लिए और मैडम ने बहुत अच्छे से बहुत सारे पहलुओं को गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को उन्होंने बहुत अच्छे से अपने स्पीच में उकेरा है मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करूंगा जो थोड़े से उस स्पीच में टच नहीं हुए होंगे मैं सबसे पहले आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा साथ ही मैं
कुछ वीडियोस भी आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा। पहले थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा पीपीटी अवेलेबल है, दिख रहा है वहां पर फुल स्क्रीन में? Yes, sir. Yes, it's visible. अच्छा, गांधी विजन फॉर इंडिया 1947 to 2047 इस विषय पर अपना कीनोट स्पीच देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद दी कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम लर्न लिखते हैं और उसमें से अगर एल हटा देते हैं तो अर्न बचता है। कहने का मतलब ये हुआ कि योर अर्निंग इज हिडन इन योर लर्निंग। आप जितना कमाएंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आप कमाएंगे। तो मेरा ये मानना है विद्यार्थियों कि ये जो कॉन्फ्रेंस आपको दी तो मौका दे रही है, इस कॉन्फ्रेंस को आप पूरा यूटिलाइज करें और इसका जो बेनिफिट है वो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में लें। मैं लर्निंग पर ही महात्मा गांधी जी के एक कोटेशन को यहाँ पर रिफर करना चाहूंगा। आयोजकों से मेरा निवेदन है कि जो एक्स्ट्रा कोई पर्सन है जिनका के माइक खुला हुआ है उनको म्यूट कर दें ताकि अनइंटरप्टेड वे में अपनी बात में कह सकूं। महात्मा गांधी का ये बड़ा फेमस कोटेशन है और एक बार मैं सरदार पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद गया था। वहां बहुत बड़ा मेन गेट है, उसके मेन गेट पर ही ये कोटेशन उकेरा हुआ है कि लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो, लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉरएवर। जीना कैसे जीना है कि कल ही मौत आ जाए, तो लिविंग फिलॉसफी शुड बी लाइक दैट। पर लर्निंग फिलॉसफी कुछ और होती है। सीखना कैसे है कि अनंत अनादिकाल तक जीना है तो कुछ सीखना है। तो ये लिविंग फिलॉसफी और लर्निंग फिलॉसफी महात्मा गांधी जी ने हमको सिखाई। मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहूंगा और इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूंगा। तो मेरा जो पहला परिचय महात्मा गांधी जी के साथ हुआ वो उनकी जीवन कथा पढ़ने के दौरान हुआ, जो ऑटोबायोग्राफी जिसका एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हिंदी भी अनुवाद अवेलेबल है, सत्य के साथ मेरे प्रियो। ये जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छी रोशनी डालती है। 1929 में ये पब्लिश हो गई थी जयको पब्लिशिंग हाउस से। महात्मा गांधी की आयु उस समय 60 वर्ष की रही और मैंने वहां पर पढ़ के ये जाना कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1893 में चले गए थे और 21 साल तक वहां पर रहे, यानी कि 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। और जैसा मैडम ने भी बताया कि ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड देयर, और वहीं पर उनका व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब मैं बात करूंगा गांधी एज ए ब्रांड। मोहनदास करमचंद गांधी is not a name only, but it is a brand. It is a phenomenon. और आप देखिए कि suited, booted, well educated lawyer, he was transformed to महात्मा गांधी। तो ये भी एक आप पैराडॉक्स देखिए कि जीवन में उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की, हमेशा बहुत सूटेड बूटेड रहते थे, बहुत अच्छी ग्रूमिंग उनकी थी। लेकिन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का शीर्षक दिया और तब से हम लोग महात्मा गांधी के रूप में उन्हें जानने लगे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन का तमगा दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से एक रेडियो एड्रेस 1944 में दे रहे थे। उस समय उन्होंने पहली बार ये फादर ऑफ द नेशन का टर्म यूज किया महात्मा गांधी के लिए, और बाद में भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको जो है ऑफिशियली स्वीकार किया।
इसी में आगे बढ़ते हुए गांधी एज ए ब्रांड में, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। जो आज हम बात कर रहे हैं, आज जो जापान में जो बात हो रही है, इकिगाई की बात हो रही है, वाबी साबी जो कंसेप्ट है जापान का, जो सिंप्लिसिटी की बात करता है, ये सारी बातें तो महात्मा गांधी बहुत पहले ही हम सबको सिखा गए हैं। आपको ध्यान होगा 1931 की बात है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, भीषण सर्दी पड़ रही थी और महात्मा गांधी जिस वेशभूषा में वहां गए थे, जो उनके उस समय एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी, तो ब्रिटिशर्स भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि किस प्रकार से ये जो है फिजिकली देखने में दुर्बल काया है और किस तरीके से वो बहुत कम वस्त्रों में यहाँ पर आए हैं और ठंड भी उन्हें नहीं लग रही। पर हम सब जानते हैं कि उस काया के अंदर कितना लोहा जैसी शक्ति थी, स्टील पावर था, विल पावर थी, डिटर्मिनेशन था। He was a very poor, very excellent leader par excellence he was। लेकिन ये भी हम सभी लोग जानते हैं, और जब हमने कुछ उस समय की उनकी स्पीच वगैरह भी सुनी है, he was not that good an orator। उसका कारण भी है वो गुजराती थे और हिंदी में कई बार उन्हें बोलने में हिचक भी होती थी, पर जो उनका पर्सनल पावर था वो उन्हें पार एक्सेलेंस का लीडर बनाता था। He was not having positional power, but he was having personal power। इंडिया इन 1947, यहाँ पर हमें याद आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो फेमस स्पीच जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से मशहूर हुई काफी, जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में संसद में दी थी। उस समय जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो अनशन कर रहे थे कलकत्ता में, और वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए वो वहां पर प्रयास करते हैं। डेफिनेटली ही वाज अनडिस्प्यूटेड लीडर, सभी की उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की हुई थी। 1947 में एक और पैराडॉक्स हम कह सकते हैं कि लोग एक तरफ तो स्वाधीनता मिलने की खुशी मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से हमारे देश का विभाजन भी हुआ था और इतने सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद में जो आजादी मिली थी, तो एनार्की भी थी। जैसा मैंने इशारा किया, सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे। इसके अलावा भी जो है अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर स्थिति में थी। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल दिया, और उसके बाद में जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और कलकत्ता के जो प्रसिद्ध सांख्यिकी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर महालनोबिस, उन्होंने जो विकास का मॉडल दिया, जो योजना का मॉडल दिया 5 ईयर प्लान का, उसके साथ में देश ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अगर हम बात करते हैं गांधी जी की फिलॉसफी की, तो हमें उनका एक और कोटेशन याद आता है, और इंसिडेंटली ये कोटेशन भी सरदार पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में अंदर एक शिलालेख पर लिखा गया है, और जो कोटेशन कहता है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। हम सब लोग दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, पर गांधी जी का कहना था कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन पहले आप अपने स्वयं के अंदर लाइए। जो आप परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, वो आप पहले अपने स्वयं के लिए कीजिए। हम सभी जानते हैं कि बहुत, मैडम ने भी इसका जिक्र किया, विद्या मैडम ने भी, कि बहुत सेल्फ डिसिप्लिन थे। एक बार के रोचक घटना है कि उनके पास एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेके आई, 9 साल के बच्चे को, और गांधी जी से उन्होंने कहा कि ये शक्कर बहुत खाता है और आप थोड़ा इसको समझाएंगे तो ये मान जाएगा। गांधी जी ने पूछा कि भाई क्या करता है, कि जब भी कहीं भी बाहर से आता है शक्कर के डब्बे में हाथ डालता है और शक्कर खा के फिर भाग जाता है। गांधी जी ने कहा, भाई एक काम करिएगा, 15 दिन के बाद में आप मेरे पास आए। 15 दिन के बाद में जब माँ उस बच्चे को लेकर के दोबारा गई वहां पर उनके पास आश्रम में, तो गांधी जी ने उस बच्चे के सिर पे हाथ फैलाते हुए प्रेम से कहा कि बेटा देखो, ऐसा मत करो, ये गलत बात है और इससे तुम्हारे
जो है शरीर को नुकसान भी हो सकता है, तो ये ठीक बात नहीं। माँ बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने कहा कि आपको अगर यही बात कहना थी तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे। गांधी जी ने माँ को जवाब दिया कि 15 दिन पहले जब आप आई थी तो मुझे भी इस प्रकार की कुछ आदत थी, तो पहले मैंने 15 दिन में अपनी वो आदत छोड़ी है और अब मैं इस बच्चे को ये सलाह दे रहा हूँ। ये भी जो बात हमने अभी की थी कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये वो अपने जीवन में किया भी करते। ब्रह्मचर्य का भी उन्होंने पालन किया है। नॉन वायलेंस पे तो उन्होंने पूरे विश्व में इसका सिक्का जमा दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो इजराइल हमास की जो जंग है और रशिया यूक्रेन की जो जंग है, इसमें गांधी जी जैसा कोई अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर अगर होता तो शायद स्थितियां कुछ भिन्न होती। इंटरनेशनल रिलेशंस में महात्मा गांधी का कोई जवाब नहीं। इस तरह से उन्होंने अन्य राष्ट्रों को भारत के पक्ष में खड़ा किया, जिसके दबाव में ब्रिटेन को हमें आजादी देना पड़ी। गांधी जी की फिलॉसफी पे अगर हम बात करें तो ही वाज अगेंस्ट द अनटचेबल। और ये जो बात है ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार उस समय के हिसाब से मैं कहूंगा, क्योंकि आज तो ये चीजें थोड़ी सी लोगों में एजुकेशन लेवल भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन उस समय गांधी जी का इस प्रकार का आचरण लोगों को कई बार उत्प्रेरित भी किया करता था, पर वो अपनी फिलॉसफी पर अड़े रहे। अर्थव्यवस्था पर भी गांधी जी के अपने विचार बहुत अच्छे थे। उनका एक और कोटेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड्स, बट देयर कैन नेवर बी इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। यानी हर व्यक्ति की जरूरत के लिए विश्व में संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए वो संसाधन कम पड़ जाएंगे। अगर हम इकोनॉमिक थॉट्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी वैश्विक कम्युनिटी से आते थे, तो वो हमेशा जो हमारे सीमित आर्थिक संसाधन है उनके अच्छे यूटिलाइजेशन पर, अच्छे उपयोग पर हमेशा जोर दिया करते थे। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने अपनी इस कुशलता का परिचय दिया है। अगर हम बात करें कि कस्टमर ओरिएंटेशन की, तो कस्टमर ओरिएंटेशन जो है दैट इज नेक्स्ट टू गॉड। वो कहते थे कि कस्टमर इज नेक्स्ट टू गॉड, और इस प्रकार से उन्होंने उनके कई सारे कोटेशंस हम बहुत सारे शॉप्स वगैरह में भी देखा करते हैं। आत्मनिर्भरता की बात करें तो मैडम ने भी जिक्र किया था कि बिलीव्ड इन वीविंग हिज ओन फैब्रिक, चरखा का इस्तेमाल वो किया करते थे। इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की जो योजना भी हम चला रहे हैं वो उनकी ही देन हम मानेंगे। स्वच्छता की बात की जाए तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अभी कुछ वर्ष पहले 2019 में हमने उनका 150वां जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया था, और हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की है, और जिसके बहुत अच्छे नतीजे भी आए हैं। हम देखते हैं कि ऐसे शहर जो पहले बहुत गंदे हुआ करते थे, वो शहर सब स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, और इसको एक जन आंदोलन के तौर पर वर्तमान सरकार ने लिया है। और मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये भी बताने में खुशी होती है कि इंदौर जो शहर है पिछले 5 बार से लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में आता है, नंबर 1 रैंकिंग उसको प्राप्त होती है। स्वच्छता से ही हेल्थ और हाइजीन भी प्राप्त हो सकते हैं। और जो अभी हम G20 में लीडरशिप दे रहे हैं और स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं गांधी जी की लीगेसी के तौर पर ही मैं इन्हें देखता हूं।
आखिर में अगर हम बात करें कि इफ वी वर अलाइव टुडे, अगर हम एक कल्पना करके देखें कि महात्मा गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो क्या होता, डेफिनेटली ही वुड हैव बीन वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि उस जमाने में कोई आईटी नहीं थी, उस जमाने में कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे, ईमेल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, फेसबुक नहीं था। आज की तारीख में ही वुड हैव बीन वेरी वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। आज भी उनकी जो फिलॉसफी है वो युवाओं काफी लुभाती है, और हमने देखा भी है। मैं अभी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स भी आपको दिखाऊंगा जो कि फिल्म आई थी लगे रहो मुन्ना भाई की, उसके अनुसार भी मैं बताना चाहूंगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि वो प्रयास करके उनके कुछ क्लोन्स भी बनाने की कोशिश करती। इस प्रकार का उनका एक एडवांस विजन था, जो सोच था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस नई तकनीकी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंगीकार कर लिया होगा, और उसके वृद्धि में, उसके बढ़ाने में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया। नटशेल में मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी वुड हैव emerged as undisputed global leader if he were alive today, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस वक्त हमारा पूरे विश्व में 5वां नंबर है अर्थव्यवस्थाओं में। 2030 तक हमारी आशा है कि भारत जो है तीसरे नंबर पर होगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद में भारत वो अर्थव्यवस्था होगी जो कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी विश्व की। ब्रिटेन को, जिसकी गुलामी में इतने वर्ष रहे, उसको हम पहले ही अभी भी पीछे छोड़ चुके हैं। 5 में जो है ब्रिटेन हमारे पीछे है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि आज एक भारतवंशी ऋषि सुनाक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जहां पर भी हमारे भारतीय जो है सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो भारत की जो प्रगति है, भारत का जो शक्ति है, वो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर मैं आप सभी को धन्यवाद देके अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक या दो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और थोड़ा मुझे समय दीजिएगा 1 मिनट का। बहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। तेरे आदम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
last video. थूकने का मन करता है और वहीं मेरे दरवाजे के बाहर थूक के चला जाता है। मन करता है साले का गला दबा दूं। उल्टा कर, उल्टा। उसको थूकने दे और रिदम में ना उसको एक मस्त स्माइल दे। फिर उसके सामने उसका रंगोली साफ कर। चाकू ना पिस्तौल ना खंजर ना कोई तलवार रे, एक मुस्कान की देखो ताकत अपना नया हथियार रे। ओ प्रेम प्यार का सबक सिखा कर रखी देश की आन रे, इंसानों से खिलाड़ी रे बस बनना एक इंसान रे। अरे 3 दिन से उसका थूक साफ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं समझेगा वो। अबे पापू बोलते हैं सब्र रखने का, एक दिन उसको शर्म आएगी, समझा? Sorry. बोले तो गांधी जिंदाबाद। Thank you very much. Thank you so much, sir. In this virtual release, we are physically apart. Your words have connected with intellectually and emotionally. Your address has been a source of inspiration, knowledge, and we sincerely appreciate your contribution. Thank you so much, sir, for gracing this virtual seminar with your presence. And you really focus on this कि स्वच्छ भारत अभियान हम सभी को like follow करना चाहिए. And we have a limited resources, so we have to use like best utilization. And you also taught the Gandhi's vision. So thank you so much, sir, for your presence. And simultaneously, we have with our chairperson, sir, Dr. Bharat Parashar, sir. Very good morning, sir. We have with our chairperson, Dr. Bharat Parashar, sir. So, sir has been instrumental in shaping the future in our university and fostering an environment of excellence, innovation, and academic resilience. Under his exceptional guidance, like leadership, our institution has achieved new heights, and his unwavering commitment to education and student welfare has made a lasting impact on our community. Sir has not only been a mentor and guide to our faculty and staff, but also been a source of inspiration for our students. His vast knowledge, experience, and dedication have instilled in this sense of purpose, pushing us to strive greatness and become leaders in our respective fields. With this, I would request to our chairperson, sir, to please come forward on the stage, sir, for a few words. माँ सरस्वती को प्रणाम, महर्षि अरविंद को प्रणाम और इस संस्थान को नमन जहाँ पर हम एकत्रित हुए। I welcome
Madam Jain and Vidyaji Jain. As Madam said कि मैं आपको तो नहीं जानती हूँ पर मैडम को जानती हूँ. So मैम Bharti Parashar is the visionary behind all this creation, this institution, and she is follower of Maharishi Arvind. Maharishi Arvind was also a freedom fighter. When Gandhiji was fighting against Britishers, he was also fighting in his own way and pattern by enlightening the people of India. Gandhiji is not a person only, he is an encyclopedia. He is a visionary. If I talk about Gandhiji for an hour or for two, that will be very less, because Gandhiji is not a person, he is an ideology. He came to India from South Africa, where the same Britishers were ruling, and as he studied in UK, where though there was no discrimination, but racism was there. That too, since from the beginning, he thought all this. Then, as far as what I think, he realized if we will fight face to face with him, with the Britishers, will not be able to succeed. So he developed a pattern where Britishers was not ready for that. He he was wearing, the black suit, he used to wear a black suit, tie and all when he came to India to connect with the Indians. Like he saw that in most of the Indians, 99% of the Indians were poor. They were only wearing a dhoti, nothing on the body except a dhoti. To connect with them, he started wearing a dhoti. And as when taxes were imposed on cotton produced in India, he started a new innovation of charkha to prepare the handmade this thing. The khadi was one of the concepts. These all were the small tools to connect with the Indian people. There was no communication, there was no newspapers. All newspapers were governed by the Britishers, regulated by them. So he started traveling across the India and giving speeches. That was a tool. How can you stop somebody who is determined to get freedom? There was a Naramgal and Naramdal and Garamdal. Few people they criticize कि गांधी जी नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, ये नहीं बनता. But I'm not agree with all that, because Dr. Jain said that
Dr. Vidya Jain ma'am is an authority on Gandhism. But I'm very young and I have not studied that much Gandhi. But because of library created by Bharati ji, Bharati Parashar, I read sometimes few papers on Gandhiji's, and so these all were the tools. So as we were talking like the Pakistan nahi banta, ye nahi banta. It is very simple today to talk all this because we have all the resources. You have right to speak, you have right to vote, you have even you can stand up and say anything against prime minister, anything about chief minister, anything about everybody, you know. But at that moment of time when there was no telephone, no electricity, no phone, no internet, nothing connecting people, he connected 33 crores of Indians together from mm, Kashmir to Kanyakumari was a very difficult task. Few people says कि वो तो बिरला जी के घर में रुकते थे, वो बॉम्बे जाते थे तो बिरला जी के यहाँ रुकते थे, तो वो पैसे वालों के नेता थे. It's not like that. What I think, he realized that without money, this mm, the freedom fighting is not possible. So he involved businessmen also. Because businessmen generally they are always take a sideline कि जो भी जीतेगा उसी के साथ हो जाएगा. So he used to stay at Birla House where he connected many Marwadis. All the Marwadis, the Birla ji was leader of them. So he used to stay there. It's not like that कि वो पैसे वालों के होते थे, पैसे वालों के होते तो वो धोती ही नहीं पहनते, कुछ और सूट पहनते हैं, वो यहाँ नहीं जाते, अमेरिका वापस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं. उनको किसी ने कहा नहीं था कि आप यहाँ आओ, लड़ो, ये करो. So the situation, the conditions were very, very against the Indians. There was no toilets. The Harijans, they used to treat the toilet, they clean the toilet, they carry toilet away from your home to bring them into the mainstream. उनको नाम उन्होंने बदला, उनका नाम हरिजन रखा कि ये तो हरि के आदमी है, एंड उनको भी उस मेन स्ट्रीम में किया इन्वॉल्व. देन टू he wrote some भजन, हरिजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीठ पराई जाने. This is a message. This was a message just कि आप दूसरों की जो पीड़ा है, जो उनके दर्द है, उनको आप पहचानो, आत्मसात करो. It's not that if you are happy, you don't think about the others. And to stop all this, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो. This is to stop the gossips.
बुरा मत देखो का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे किसी को कोई पीट रहा है, अंग्रेज पीट रहा है तो आप देख के निकल जाओ. You try to stop that. But in the society, the Britishers, they used to divide and rule from the beginning. The only, I read somewhere, we were 35 crores around uh, when we were not having freedom. And there were only 2 lakhs of Britishers were deployed in India. And if you see 2 lakhs of Britishers ruling 35, 33 crores of Indians, how it was possible? Because they were having their tactics, techniques, whereas Gandhiji brought in his own way to get freedom. So Gandhiji itself, like recently in Jaipur also, a research center is been inaugurated by the Chief Minister and Rahul Gandhi, Gandhi Research Center. So Gandhiji is a torchlight. Even today, when the lot many parties, lots many the political party and many other countries, they are trying to play with our people. We must read Gandhiji, we must study Gandhiji to stop all that, and how we can get the unity and how we can get united. We must learn from his teachings. And I was not supposed to come, and I have not prepared anything much about it. So I have not much to say. But Gandhiji is certainly a path, an ideology. He never built a house. You never know Gandhiji's sons and daughters what they are doing. I don't know how many out of you are doing they don't have offshore companies, they don't have any shipping company or a factory. He worked and he devoted his life for this country only. Likewise, we today should take some oath that we must read at least one book about Gandhiji, and not all, but will follow at least 3 teachings of Gandhiji's in our lives. That is simplicity. It was very simple. Like determination. He started Dandi March because all odds, and for that he was in prison. In the morning also, when Jain Sahab and everybody insisted me, Kakkar Sahab insisted me to come down, I sorted out few books, and there was a book 21. Another keynote actually. You have a deep understanding, and I'm glad that you refer to those controversies, whether it's Pakistan or his connection with the capitalism. I'm glad that you were speaking of. No. So
I took out one book written by some South Indian writer. The 21 months in prison of Gandhi, in the prison of by Gandhi जी. उसमें एक छोटा सा वाक्य लिखा है कि वहां पे जब वो जेल में थे तो गांधी जी का जन्मदिन आया तो डॉक्टर सरोजनी नायडू और सब ने रात को बैठ के प्लान बनाया कि उनका बर्थडे कैसे मनाया जाए, ये मनाया जाए. गांधी जी रात को जल्दी सो जाते थे, फिर भी वो उस खुसर बुजुर से जाग गए. तो उन्होंने सुबह सब वहां बैठे थे, प्रार्थना सुबह रोज प्रार्थना होती थी, शाम को रोज प्रार्थना होती थी. तो उस प्रार्थना में सरोजनी नायडू ने कहा कि आज हम कुछ करना चाहते हैं. उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे शैतानी ख्याल सब देख लिए हैं, अब जब बर्थडे तब मनाएंगे जब देश आजाद होगा. केक तो अंग्रेज खाते हैं, तो तुम एक काम करो, आज सब एक्स्ट्रा चरखा चलाएंगे 1 घंटा, तो ये मेरा बर्थडे रिवॉर्ड हो. सो गांधी जी के बारे में बोलना, मैं क्या बोलूं, मैं समझ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम होता तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गांधी जी के साथ होता. तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड द ऑर्गेनाइजर्स, बीसी साहब, मैडम विद्या जैन, to give a time, and Neetu Shah. हाँ? मैं नेक्स्ट टाइम फिर एक बार रखेंगे और हम शरीर सुना नहीं मैम, मैं आपको सुनूंगा, जरूर सुनूंगा. हम वापस एक ऐसा ही एक वो रखेंगे जिसमें कुछ और उसको जोड़ेंगे. अभी फेस्टिव टाइम है, कुछ सीटें खाली है, पिछली बार पूरी सीटें भरी हो. Neetu ma'am, the other associated person who organized it, I'm very happy कि गांधी जी के बारे में आज के जमाने में कुछ सोच रहा है. ये अगली बार हम गांधी जी के साथ हमारे जो फिलोसफर और महर्षि अरविंद है उनके बारे में भी साथ में रखेंगे कुछ, क्योंकि उनका भी डिवाइन एनलाइटनिंग ऑफ माइंड एंड सोल, उन्होंने उस बारे में काम किया. और he was also a freedom fighter. He went to jail for 2.5 years. He was a teacher. Mostly he was in the Baroda college, जो Baroda University हो गया. He directly appointed as a vice principal. So he was, and the Gandhiji was on the same path, the simplicity, determination. और मैडम को मैं सुनने से रह गया. दिस इज माय बैड लक मैम. और आप सब कुछ गांधी जी को फॉलो करें, कुछ नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करें. टाइम बदल गया है, जरूरी नहीं है कि धोती पहनने ही और ऊपर नहीं पहने, पर बहुत कुछ है करने को. उसके अलावा बहुत कुछ है जो छोड़ के गए हैं हमारे लिए. There's only India who is having, this country is having history of 5,000, more than 5,000 years. Krishna gave Mahabharata, Ramayana, Gita, so many things. But likewise, Gandhiji also is a book and an encyclopedia. We must study and follow his path. Thank you. Thanks a lot for calling me here and like rather bringing me here. उन्होंने मेरे को दे रखे हैं सेडेटिव, तो उससे मैं बहुत वैसे रहता हूँ. तो फिर मैं आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर मैं नहीं आता तो मैं मिस करता. और मैडम आपका स्पीच में रह गया. स्पीच नहीं है आपकी, स्पीच नहीं है ये,
कि आपके जो नॉलेज है उससे मैं वंचित रह गया, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम पूरी करूंगा, या आप कहीं दे रही होंगी तो मैं आऊंगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इवन जो मेरा सुपरवाइजर है उसने भी फोटो भेजी मेरे को कि सर आज फंक्शन है, आपको आना है। और मोस्ट प्रोबेबली वो इस डायस की थी। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your profound and insightful address. Your words will undoubtedly guide our discussion throughout this seminar, and your support is source of great encouragement. Thank you so much, sir. Now moving forward to the next and time for vote of thanks. May I now invite our registrar, Mr. Gajendra Singh Yadav, sir, to kindly come forward to this a vote of thanks for inaugural seminar. कविता कविता We have a great session of seminar of Gandhi Vision for 1947 to 47. We extend our heartfelt gratitude to make this event possible. Thank to Chairperson Sir, Chief Guest Ma'am Vidya Ma'am, Keynote Speaker Saxena Sir, Professor S.C. Jain Sir, MD Kakkar Sir for this blessing of occasion. We extend our appreciation to all scholars, researchers who will sharing this knowledge. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now, as a token of our deep appreciation for the time, insight, and guidance our dignitaries have graciously offered us today, we would like to take a moment to honor with them a small gesture of gratitude. So, now I would request our chairperson, Sir Dr. Bharat Parshar, sir, to honor our chief guest, Professor Vidya Jain, ma'am, with a memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would request Dr. Neetu Sharma, ma'am, to honor our chief guest, Professor Vidya Jain, ma'am, with a shawl. Ma'am, your presence has truly enriched our seminar today. We are grateful for your participation. Now, I would request Dr. Shiv Kumar Singh, sir, to honor our chairperson, Dr. Bharat Parshar, sir, with a shawl and bouquet. Thank you, sir. मेरी तरफ से सर Now I would request our registrar, Mr. Gajendra Yadav, sir, to honor our President, Professor S.C. Jain, sir, with a shawl. पट्टी चला जाएगा।
Thank you, sir. Now I would request Dr. Satish Gupta sir to honor our registrar Mr. Gajendra Singh Yadav sir with a shawl. सर नहीं आ रहा सर एक बार प्लीज कैमरे सर में नहीं आ इधर रहा स्टेज पे स्टेज स्टेज Thank you, sir. As we have been actively engaged in our discussion and presentation, we understand the importance of taking a short break to refresh and recharge. It is now time for well-deserved coffee break and tea break. So let us take a short coffee break and please be back on your screen in 30 minutes as we have a fantastic technical session ahead. Thank you so much to all of you. चलिए